Hello and namaste everyone. Welcome to the show Good Old Days. आज हमारे साथ हैं एक IIT खड़गपुर के एलुमनस एंड एक एडटेक कंपनी के फाउंडर जो एजुकेशन को पर्सनलाइज कर रहे हैं, स्कूल्स एंड स्टूडेंट्स को फ्यूचर रेडी बना रहे हैं. बट द बिगेस्ट न्यूज इज इनकी कंपनी हाल में ही एक्वायर हो गई है. Yes, I'm talking about ClassKlap, a B2B edtech company and its co-founder Varun Kumar. Hi Varun, सबसे पहले तो आपको लख बधाइयाँ. ClassKlap has been acquired and in some ways it's a dream of every entrepreneur. And तो कैसा लग रहा है आपको? And what is next for you, for Varun the entrepreneur? Thank you, Neha. Glad to be on the show. It's been a really long journey, 11 years so far, and it's definitely not ended. It's a next step because unlike B2C industry, the B2B industry really suffered because of COVID, because students were not able to come to the school. So we are really looking to bounce back and trying to identify an opportunity to kind of really scale the company pan-India. So we joined hand with Eupheus Learning, which is a Delhi-based company, and we found really a lot of complementary forces in terms of geography, segment, and the product. So basically, by this kind of inorganic growth, both the teams will be able to now cover pretty much across the country, across the segments. So we are pretty excited. So journey as entrepreneur continues with a larger team and a bigger mission to become the largest school-based curriculum product company. So we are very excited as entrepreneur and as team, because always you're looking to become the number one company, right? That's the big goal. Definitely acquisition is a very exciting part as entrepreneur, right? Because raising institutional fund and then providing exits to the investor and kind of is a big milestone and gives you credibility as entrepreneur as well. So very excited about that as well. Yeah. Whoa. ओके, सो वरुण, अब हम चलते हैं लखनऊ की नवाबी गलियों में जहाँ आपका बचपन बीता. बैक देन इट मस्ट बी अ स्मॉल टाउन, अभी तो काफ़ी बड़ा हो गया है. तो हाउ वाज योर चाइल्डहुड? Yeah, Lucknow, interestingly, while it was a small town, because Mr. Vajpayee was the prime minister and it was his constituency, right? So we saw a lot of development growing up. And काफ़ी एजुकेशन टाउन है लखनऊ, राइट? सो काफ़ी फोकस्ड है एजुकेशन पे. सो दैट वे वी आर क्वाइट लकी एंड यू वुड सी दैट गुड इंस्टीट्यूट्स, गुड स्कूल्स, गुड कोचिंग एटसेट्रा. सो दैट वे इट वाज प्रीटी नाइस. बट इंटरेस्टिंगली आई वेंट टू अ हिंदी मीडियम स्कूल. सो मेरे पेरेंट्स का था कि मतलब बच्चों को रूट से क्लोज रखना है तो चलो हिंदी मीडियम में डाल के रखते हैं. बेसिकली नया धारा आ रहा है, सब लोग इंग्लिश की तरफ भाग रहे हैं. लेट्स नॉट डू व्हाट एवरीबडी इज ट्राइंग टू डू. तो फिर हमने 12th तक मेरा हिंदी मीडियम में था. सो इंटरेस्टिंगली स्कूल में पूरी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब हिंदी में पढ़ते थे. फिर IIT के लिए तैयारी इंग्लिश में. सो दैट वाज अ प्रीटी इंटरेस्टिंग ट्रांजिशन बिकॉज ऑल द गुड बुक्स, ऑल द गुड कोचिंग्स वर इन इंग्लिश. सो यू डिड नॉट हैव अ option to kind of, I mean, you can technically write IIT exam in Hindi, but in terms of preparation, it's basically the resources are available in English. But क्योंकि आप स्कूल में तो इंग्लिश पढ़ते हो तो ऐसा नहीं है कि इट्स अननोन लैंग्वेज, बट जस्ट टू गेट फेमिलियराइज एंड कंफर्टेबल डेफिनेटली वाज अ चैलेंज. So Lucknow pretty exciting, and yeah, the other thing is we grew up. My father is a scientist, retired scientist now, and from Central Drug Research Institute. So हम लोग का साइंटिस्ट की जो एक गवर्नमेंट कॉलोनीज होती हैं, राइट, जैसे, तो दैट वाज देयर. So that also was interesting because if you live in a colony, gated community, there is safety and security. So kids get opportunity to play. So हम लोगों को मतलब काफ़ी आज़ादी थी. I mean, in that compound, खेल रहे हैं, सब कर रहे हैं. So I think that kind of led to overall kind of a happy childhood and overall growth. So it was pretty exciting. Lucknow was a good phase of life. अच्छा, तो वरुण, आपने हमें पहले बताया था जब आपने IIT खड़गपुर ज्वाइन किया, वहाँ पहुँचे आप, तो यू हैड दिस फीलिंग कि यू आरंट स्मार्ट इनफ या आपके पीयर्स आर बेटर देन यू.
तो ये सब फीलिंग थी आपको, एंड वो आप कभी ओवरकम कर पाए? मतलब आपका बचपन इतना स्मूथ था एंड जब आईआईटी खड़गपुर पहुंचे तो ये जो फीलिंग्स होती है, बिकॉज आई एम आस्किंग दिस बिकॉज आई ऑल्सो हैड द सेम फीलिंग एंड आई थिंक दिस इज कॉमन। जब आप एक ड्रॉप ईयर लेके आते हैं तो आपको लगता है कि आप तो घिसाई करके आए हो, स्मार्ट तो बाकी लोग ही हैं। No, तो I think it was probably not as a negative thing for me. I used to see कि अच्छा मतलब अच्छे लोगों के साथ मतलब अब तो smart लोगों के साथ मौका मिलेगा, right? Like, हाँ and you will get to hang out and your friends will be smarter, right? And I really used to look up to my friends. And in fact मेरे को तो like it's definitely a feeling which is there, right? Because when you come ज़्यादातर लोग जो आईआईटी में आते हैं अपने स्कूल में हमेशा टॉप करे होते हैं, राइट? लेकिन जब आप आईआईटी पहुंचते हो देन यू रियलाइज ओके अच्छा मतलब यू आर नॉट द एग्जैक्टली। स्मार्टेस्ट। सो द अदर्स फॉर मी, मेरे को जो लगता था कि अरे इतने अच्छे स्मार्ट स्मार्ट दोस्त हैं, राइट? मतलब तो हाँ फॉर मी द बिगेस्ट थिंग वाज कि वो लोग नोट्स बनाते थे, मैं पढ़ता था बेसिकली, राइट? लाइक सो आई मीन आई टुक इट दैट वे कि यार मतलब अब वो तेज कोई लड़का नोट बना रहा है तो मैं क्यों फाइट मारूं बेसिकली, राइट? फिर या बढ़िया और बढ़िया। हाँ, और आई वुड सिट विद देम लाइक कि एक्चुअली में इलेक्ट्रॉनिक्स का लैब है तो लाइक माय बैचमेट इज हेल्पिंग मी, दे वुड कम एंड एक्सप्लेन कि ये ऐसे होता है। तो बेसिकली जहाँ भी अटक रहे हो देयर इज ऑलवेज समवन टू एक्सप्लेन एंड काइंड ऑफ हेल्प यू। सो वो मतलब काफी मस्त पार्ट था। तो बिकॉज लाइक एक्चुअली जो घिसाई होती है एक साल की, इट लाइक काइंड ऑफ फोर्सेस यू टू मतलब फिगर आउट लॉट ऑफ थिंग्स ऑन योर ओन, राइट? मतलब आप रगड़ रहे हो, फिगर आउट कर रहे हो। हाँ वी आर लाइक बंच ऑफ स्मार्ट पीपल, कहीं अटके आपने पूछा और बेसिकली somebody is there to help you and clarify your doubt। तो मतलब काफी मतलब आई एंजॉयड अ लॉट। मतलब मेरे को तो ऐसा लगा कि मतलब कम मेहनत करनी पड़ी। इट्स लाइक इट्स गुड टू बी अमंग स्मार्ट पीपल। एंड एक्चुअली व्हेन जब हम लोग काउंसलिंग कर रहे थे दैट वाज वन ऑफ द क्वेश्चन, यू वांट टू बी लाइक the way you choose the college or the branch or anything, right? Like you want to be among the smartest people because they'll push you and to be better. So it was pretty fun actually. The first year I remember was the most like peaceful and chilled out. कुछ भी fight नहीं हुआ रही थी। Yeah. तो आपने इसको कभी नेगेटिव वे में नहीं लिया कि यू वर? I think like it may become negative, so I don't want to sound it like कि नहीं ये तो बड़ा अच्छा चीज है। I think I was lucky. The friends were quite good basically, and like they're quite helpful. And I think if it becomes competitive, right? Like when people are trying to compete for a grade or like जैसे डिप्सी वगैरह का pressure हो जाता है। So probably I think because I did not want to do department change basically. So in fact I had enough CG to change to other department, but I was quite chilled out. So मैंने नहीं किया था department change. And then I was DR1 until the end of the whatever and college. But I think overall the whole, I think the competitiveness or the peer pressure is what probably kind of makes that difference. But I think I had good friends and उतना pressure नहीं था कि department change करना है, तो I think it was a good time. तो वरुण, जनरली लोगों का एम होता है डिपार्टमेंट चेंज, एंड आप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में थे, राइट? तो इन दैट डिपार्टमेंट एवरीवन वांट्स कि कुछ बेटर मिल जाए। तो आप सीजी होते हुए भी आपने डिपार्टमेंट चेंज चूज नहीं किया? व्हाई? Yeah, because for me, I told, right, my dad is a scientist and the bunch of work he did on the policy around like sustainable agriculture, and a lot of his work revolved around that. So एक था फंडा कि मतलब एग्रीकल्चर का तो फ्यूचर ब्राइट ही है, मतलब राइट लाइक कि और somehow given the way like or the childhood, I can't point out to a specific thing, but फंडा था कुछ अपना करना है, तो वो एक फंडा शुरू से था that I wanted to do something on my own. So यार एग्रीकल्चर तो अच्छा फील्ड है कुछ करने के लिए, तो कुछ तो कर ही लेंगे मतलब। So there was no doubt on that. So और पीयर प्रेशर इफेक्ट नहीं करता था कि चलो सब जा रहे हैं, सब डिपार्टमेंट चेंज कर रहे हैं जिनकी इतनी अच्छी सीजी आई है, तो वो पीयर प्रेशर इफेक्ट नहीं किया आपको कभी? yeah, I think that's what I was saying, right? Because probably I get it from my dad because he always did something different from what everybody else was doing. So वो सब लोग ये कर रहे हैं इसलिए ये करना है वाली फीलिंग, आई थिंक
that value I probably got from my dad. Basically, like the environment you grow up in, you end up like doing those things. And nothing wrong in kind of chasing success. And I'm not trying to say that. It's just that the environment I grew up in, and I think now retrospectively I can be smart and say कि देखो ये फंडा लगाया, but I don't think उतना फंडा लगाया basically, right? कि we all are product of our environment basically, right? तो yeah, so नहीं था peer pressure. ओके तो एक इंटरेस्टिंग किस्सा है जो आप हमारे व्यूअर्स के साथ भी शेयर करें. आपने अपने फर्स्ट ईयर के एंड में एक कैंपेन चलाया था टू सेव योर सीनियर्स इन एन इंसिडेंट ऑफ रैगिंग. उस समय जनरली हम भाग रहे होते हैं सीनियर्स से और आप उनको बचाने में लगे हुए थे. सो व्हाट वाज योर थिंकिंग? प्लीज टेल अस अबाउट दैट कैंपेन. या तो बेसिकली एज यू आर सेइंग राइट कि जो लोग ड्रॉप लेके आते हैं दे आर quite chilled out about because they have seen a lot in life, right? Like so overall basically I was quite chilled out. So senior से डर वगैरह ऐसा कुछ फंडा था नहीं basically. And then हम लोग के टाइम में I don't know अभी होता है कि नहीं, there is something called tea party where seniors used to invite incoming second year for like a tea party in the first year itself, like to after the hall allocation is done. तो उसमें बेसिकली जो हॉल मेरे को अलॉट हुआ था, नो पॉइंट इन गेटिंग द नेम, बेसिकली सम यू कैन से रैगिंग और सम इंटरेक्शन वाज गोइंग ऑन, अगेन विदाउट गेटिंग इनटू डिटेल. एंड उसमें बेसिकली समबडी गॉट अपसेट एंड वेंट टू डू द कंप्लेन. अब उसमें इशू ये हुआ कि बेसिकली द पर्सन वेंट टू कंप्लेन टू पुलिस बिकॉज द पर्सन गॉट रियली स्केर्ड. Which is like quite, I mean, possible, and I'm not saying right or wrong. But because of that, what happened is कि जो the punishment which was being given could have affected the seniors. And मतलब क्योंकि even the seniors थे were probably at my age itself, right? मतलब because I was probably couple years older because of drop. So then था कि मतलब in the end हम सब बच्चे ही लोग हैं. मतलब it's not that कोई बहुत ज़्यादा वहाँ smart और enlightened बैठा है basically. And like and most people are doing what is like what everybody does, right? So ठीक है, मतलब punishment मिलना चाहिए, but like लग रहा था कि 1 साल 2 साल का बैक लग जाएगा या कुछ उस टाइप की चीज हो जाएगा, right? Which I felt personally it's a very is not proportionate to the whatever they were doing. So I went and basically then मुझे लगा कि ठीक नहीं है तो कुछ करना चाहिए basically, which is usually my mantra कि कुछ ठीक नहीं लग रहा है तो कुछ करो उसके बारे में, बैठे मत रहो. तो देन बेसिकली आई काइंड ऑफ वेंट टू द ऑल माई बैचमेट्स जिनको वो हॉल अलॉट हुआ था, एंड आई डिड लाइक अ स्मॉल सिग्नेचर कैंपेन कि भाई आप ईयर बैक मत लगाइए, बेसिकली आप कुछ और फॉर्म ऑफ पनिशमेंट दीजिए. एंड देन आई काइंड ऑफ वेंट एंड गेव दैट लेटर टू डीन. एंड इट वाज नॉट लाइक कि सीनियर्स मेड मी डू इट और एनीथिंग. मेरे को लगा कि हाँ ये प्रोपोर्शनेट नहीं लग रहा है तो ये नहीं होना चाहिए. एंड इट वाज नॉट अबाउट कि ये ठीक हुआ ये गलत हुआ, और जस्ट आई फेल्ट कि दिस इज नॉट लाइक इन प्रोपोर्शनल टू द एक्ट, सो आप ये मत करिए. एंड आई थिंक इट नहीं लगी थी फिर बाद में. सो आई डोंट नो हाउ मच लेटर हेल्प, बट आई थिंक ईयर बैक नहीं लगी थी किसी के. Okay, so your peers were ready to sign, or like did they support you, or you faced a lot of resistance from them? No, so because some of them were afraid of what happened basically. And again, right, like everybody's experience will be different, and now we are far more mature to see like those nuances. But like at that time people did push back कि यार मतलब तो हम लोगों को फिर वो हॉस्टल से हटा दिया गया था. तो some people are scared कि अच्छा ये साइन करने से हॉस्टल तो नहीं मिल जाएगा क्या, and stuff of that. And then like because that decision was already taken, so I was like कि नहीं वो तो नहीं होगा. And then like I think लेटर भी शायद कुछ मॉडिफाई किया to make sure that part gets included कि हॉस्टल नहीं मिलना चाहिए. But so but then but see most people, if you see the thing is we feel कि कुछ रेजिस्टेंस आएगा तो मतलब बहुत कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा तो बहुत लड़ाई हो जाएगी. तो आई वॉज मुझे कभी कॉन्फ्लिक्ट से डर नहीं लगता है कि मतलब अच्छा किसी से बहस हो जाएगी तो इट्स नॉट अ बैड थिंग. मतलब किसी का अपना ओपिनियन है, वो बोल रहा है, आप अपना ओपिनियन बोलो. एंड यूजुअली लाइक लॉट ऑफ टाइम लोग मतलब दे कम टू अ कॉमन पॉइंट. मतलब लॉट ऑफ टाइम लोग अपने मन में ही सोचते रहते हैं ये बोलेंगे तो वो हो जाएगा, वो बोलेंगे तो ये हो जाएगा. बट आप जाके किसी से आप नॉर्मली रिस्पेक्टफुली किसी से बात करो
तो people usually listen to you and then कुछ लोगों ने नहीं भी किया sign, which was okay. I mean like but it was quite like I mean I didn't even think of it as a big thing. अभी कुछ ठीक नहीं लग रहा है, कुछ कर रहे हैं, right? Like उतना मतलब सोचने का नहीं है उतना ज़्यादा. Wow. And your seniors knew about that you are running this campaign? Only one or two whom I knew, basically they knew that I was doing, but given even I think they were scared of what is going on, they tried like not to like interact too much or anything. So it was like its own thing, and then kind of gave it to Dosa, and like it just like happened. So it was not like it just happened. It was not a big thing or like a big कि कुछ movement हो रहा है, कुछ तो बड़ा हो रहा है. Yeah. Okay. And तो आपको नए हॉस्टल या हॉल में शिफ्ट कर दिया गया, राइट? इसके बाद तो वहाँ पे लोगों को पता था कि आपने इस तरह से कैंपेन चलाया है सीनियर्स को सेव करने के लिए. डिड दे ट्रीट यू डिफरेंटली? नहीं, सीनियर्स को तो नहीं पता था ऑफ कोर्स, एंड जिन लोगों को सेम हॉल अलॉट हुआ था उनको पता था कि इसने कुछ किया है. बट इन जनरल आई वाज क्वाइट एक्टिव बेसिकली इन द फर्स्ट ईयर, एंड लाइक इन जनरल फ्रेंड्स ग्रुप में. सो आई थिंक लाइक there are a lot of other things were going on. See, a lot of time we feel कि one act defines you, right? Like it's, but like usually like you are made of like so many things. You do so many things, and you have so many friends and interactions, and your personality keeps evolving. So सबका कई बार हम लोग कहते हैं impression बना लेते हैं कि ये लड़का तो ऐसा है, ये लड़की तो ऐसी है. But ऐसा नहीं होता है. 4 साल में भी कितने लोगों ने कितनी अलग अलग चीजें की, और and sometimes you get surprised. So I think if you keep interacting people will keep surprising you. But हाँ, ऐसा नहीं था कि this particular incident defined like or kind of created a specific image in other people's mind. Yeah, but at that age ये इतना कैंपेन चलाना, इतना enthusiasm दिखाना किसी particular चीज़ के लिए, it was quite interesting. And I think the personality we are getting, the personality we can tell you about you is you like being in background and getting things done. You don't like recognition or some kind of limelight, right? Yeah, again, like as I said, right, like I may claim कि I'm very humble or anything, but again, like as I said, right, family values, right? Like so I've seen like what I saw, like ज़्यादा अपने बारे में बात मत करो, right? Like it's a very normal thing said कि मतलब ठीक है, you have done some, नेकी कर दरिया में डाल, कुछ करते चलो, right? Let me put it this way, right? When you're in college उतना सोचते नहीं हो आप basically. आप बस I think like when we become older and we have so many responsibilities on our head, when you get married, you are like doing startup, you have to provide leadership to someone, then you start thinking and analyzing. But I think when you're in college, the good thing is like you can just do things without like over analyzing, or I do over analyze a lot now, but definitely college में तो बस like जो मन में आता था करते थे basically. So हाँ, तो आपका naturally ही personality थोड़ा background में रह के काम करने वाला yeah, था, yeah, right? definitely, हाँ, definitely. हाँ. So the message we are getting from this incident is take action. If you are not liking something, then do something about it. ऐसे हाथ पर हाथ रख कर बैठे नहीं रहना है, कुछ change करना है, and वो कुछ change से like it can create a big impact in someone's life. You saved your seniors 1 year, or maybe career, mental peace. Yeah, so basically the कुछ करना है वाला, right? Like हाथ पे हाथ धरे बैठे मत रहो. And I think हाथ पे हाथ बैठे रहो तो एक है. I think lot of people actually sit and crib about it कि ये क्यों नहीं हो रहा है, वो क्यों नहीं हो रहा है. When we try to basically find कि किसकी गलती है, like किसी को ढूंढो किसी की, but आप करो ना कुछ अगर आपको ठीक नहीं लग रहा है. तो इनफैक्ट हम लोग 1 साल आए थे KGP हायरिंग के लिए, एंड तब हमने क्या किया बेसिकली, वी गेव इन द जो लोग सेलेक्ट हुए बेसिकली 60-70 लोग, और सबको हमने 1,000 रुपये दिया कैश सुबह, मतलब. एंड वी सेड 1,000 रुपये से जो कर सकते हो करो, कैंपस में आके प्रेजेंट करो क्या किया. तो तो बेसिकली इंस्टीट्यूट में हल्ला हो गया कि पैसा बट रहा है, पैसा बट रहा है बेसिकली. Exactly. एंड लॉट ऑफ पीपल वेंट एंड डिड बेसिकली. किसी ने एक्वागार्ड फिक्स कराया, किसी ने चम्मच खरीद के खत्म हो गए थे मेस में ठीक कराया, किसी का पेड़ कट गया था.
and you won't believe more than half of people came back and returned the money, saying कि पैसे की जरूरत ही नहीं पड़ी, हम गए, हमने बोला ये करना है, और all it took is to make the complaint and it happened basically. So lot of like, so it was so interesting. Then लोगों को आपने 1,000 रुपए दिए, काम भी हो गया और लोग पैसा भी वापस करके चले गए कि नहीं मतलब इसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ी बेसिकली. सो किसी कोई नाली ठीक करा के आ गया, इंस्टीट्यूट में इतना मेंटेनेंस का काम हो गया होगा उस दिन बेसिकली इन लोगों के चक्कर में. बट लाइक दिस शोज कि आप हाथ पे हाथ धरे मत बैठे रहो, राइट? लाइक इट and that whole initiative, right, basically when you go and it also gives you a lot of confidence, right, ki yeah, I mean something. Because all of us, like when you come to a premium institute like IIT, right, like it's like society puts that expectation. So unless you have a way to channelize that energy, right, like you feel very like negative. So if you can convert it to action, you feel much more like positive and like कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं लाइफ में, I mean something, right? So I think I always like prefer action over this kind of sitting idle or like craving. So yeah, I mean that's a value I live by. Yeah. So your college experiences helped you in building this foundation or philosophy, don't sit, take action. How has this philosophy helped you in your entrepreneurial journey? Yeah, so I think in the college, KGP gave that platform and environment जहाँ पे आप कर सकते हो, right? Like lot of time you are in society जहाँ पे आपको वो opportunity ही नहीं मिलती है कि आप कुछ कर पाओ. But like I think being in IIT Premium Institute, like a lot of that gives you that ability, right, and builds that confidence. And then the whole element of working with good people, smart people, right? And I think that when you come to a startup, right, in the end, essentially startup is about कि अच्छा society में या market में ये gap है, और and then you are, so the difference between entrepreneurship and say trading is that trading में you're just like doing a value exchange or economic exchange and बीच में आप कुछ उसमें commission बना रहे हो, right, versus कोई gap है fundamental market में उसको आप पूरा कर रहे हो, right, basically. So and then the way you do it, like if you ask any VC or any investor की भाई आप पैसा कैसे लगाते हो, and most of the time they will say कि देखो आइडिया कभी भी fully evolve नहीं होता है, at least early stage of funding के time पे. You back the team, right? So basically the whole concept of solving a problem, so in fact if you look at investors value कि इसे क्या problem solve कर रहे हो, they actually value less about कि कितना strong तुम्हारा solution है या कितना strong product है, because product evolves over time and funding आती है, market से feedback आती है, product evolve होता है. But what is the nature of problem you are solving and how good your team is, right? Like so essentially startup का economic value इन्हीं दो फंडों से आता है, right? कि मतलब आप कैसे लोग और आपकी कैसी टीम है, कैसा इंटरेक्शन है, और आप क्या प्रॉब्लम के पीछे जा रहे हो, किस प्रॉब्लम के पीछे दौड़ रहे हो, क्या सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो. सो दैट वे आई थिंक आई एम प्रीटी थैंकफुल टू केजीपी कि ये दो चीजें मतलब मुझे वहां से मिली. राइट. सो बिफोर वी रैप अप वरुण, एक फन क्वेश्चन. तो आपका निक नेम कॉलेज में हलवाई था, इसके पीछे क्या स्टोरी रही है? नहीं तो हाँ, सो बेसिकली जब शाम को हम लोग ऐसे बैठ के बकर करते रहते थे, राइट, बेसिकली कि फन ग्रुप ऑफ फ्रेंड, एंड अगेन एज ए सेट, राइट, कि बाकी काफी लोग अच्छे पढ़ाई करते थे, नोट्स बनाते थे, और मैं तो बस आराम से कॉपी करता था, तो मेरे पास काफी टाइम रहता था बकर करने के लिए. सो हम लोग बैठ के जैसे ज्ञान वान देते रहते थे बेसिकली. बनियान लाइक एंड इट यूज्ड टू बी हॉट इन केजीपी, राइट, सो यू वेयर द बनियान. So it's a very typical North Indian halwai look. Like बैठे हैं आप चर्चा कर रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं. So then like friends started calling me halwai, and वहाँ से वो नाम पड़ गया basically, and it was fun, and yeah, and it also basically tells you कि how, I mean again action करने के लिए बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, especially if you are among smart people, right? Like किसी ने कुछ figure out कर रखा है, आराम से जाकर discuss करो and enjoy करो. तो काफ़ी enjoy करते थे actually में, मतलब KGP में मतलब बकर काफ़ी करते थे. तो yeah, so that's the story behind name halwai. Okay, so with this we are coming to the end of this podcast. So वरुण, जाते जाते हमारे स्टूडेंट्स के लिए बताएं कोई प्रैक्टिकल टूल और एक्शन दैट दे कैन टेक इन देयर कॉलेज ईयर्स टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन. आपका डोंट सिट टेक एक्शन एडवाइस तो है ही, बट इफ यू कैन गिव अस समथिंग प्रैक्टिकल to work on.
Yeah, so don't sit and take action is of course one, but the second is कि वो ask for help. And वो help में कई बार जो gap आता है हम लोग especially जब young होते हैं, right, like we see कि help लेना अपनी weakness दिखाना है. So the word which basically helped me understand later, showing your weak versus showing your vulnerability. There's a slight difference कि हम जब अपने friend के पास किसी help के लिए जाते हैं तो हम अपनी vulnerability कि हाँ, like this is where I need help. So if you can phrase it as your vulnerability, and you share your vulnerability with people who are close to you, right, who care about you. And I think actually people do love to help a lot, and like the journey which I had was not possible without help from others, and I'm thankful to all my friends who really encouraged me, and in all other ways, right, whether it's this bucker and this thing to like any form of help. But I think asking help is from people who care about you is very important, and it should not be looked as a sign of weakness, and actually you will be closer and you form stronger connection basically. जब आप किसी से हेल्प मांगते हो और किसी के साथ अपना वल्नरेबिलिटी शेयर करते हो, आप उससे उतना ही और क्लोज होते हो. तो बेसिकली एंड आई एम नॉट सेइंग कि जाके स्टार्ट बेगिंग पीपल कि भाई ये कर दो मेरे लिए, बट लाइक जेन्युइनली इफ यू आर वल्नरेबल, इफ यू आर स्टक, I think like you should reach out to your friends, and you will find that you're closer to your friends than you are. So how fear का articulation मत लाओ life में, reach out करो friends को. Great advice. I mean, thank you so much, Varun, for sharing these experiences and advices. And I mean, thank you for your time. And it was wonderful talking to you. It was your entrepreneurial journey is very inspiring, and I think it will inspire our viewers also. Thank you again for being here for us. Welcome Neha, and all the best to all the young minds, and really looking forward कि ये लोग अभी क्या मचाएंगे निकल के कॉलेज से. So all the best to everyone. Thank you so much. Thank you.